Hello, bachcho. Let's read out the questions. Question says the value of integration minus pi to pi cos square of x by 1 plus a to the power x dx where a is greater than to 0 is. So यहाँ पर हमें given integration minus pi to pi cosine square of x by 1 plus a to the power x dx for the region of a greater than to 0 integration find out करना है. तो चलिए start करते हैं solutions से. But before of that, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम simply the concept of definite integration property का use करेंगे. Definite integration property, so this can be given as the integration of a to b f of x dx. This will be equals to the integration of a to b f of a plus b minus x dx होगा. So इसी प्रॉपर्टी के द्वारा हम इसको सॉल्व करेंगे. So first of all, we do let the given integration as I is equals to integration of minus pi to pi minus pi to pi cosine square of x divided by 1 plus a to the power x dx for a to be greater than to 0. इसको हम मान लेंगे equation first. Now we will apply the property, that is integration of a to b f of x dx is equals to integration of a to b f of a plus b minus of x dx. So इस property के according our integration will become integration minus pi to pi into में cosine square of minus pi plus pi minus of x divided by 1 plus a to power minus pi plus pi minus of x dx. Now if we try to simplify the expression, so we will get that the integration I would be equals to the integration of minus pi to pi. In the numerator, plus pi minus pi get cancelled, and it will simply become cosine square of minus of x divided by 1 plus pi minus pi get cancelled. It will become a to the power minus of x dx. So this will be equals to integration of minus pi to plus pi. So यहाँ पर simply cosine square of minus x. So as we know कि cosine x ये एक इवन फंक्शन होता है, that is why cosine square of minus x cosine square of x हो जाएगा divided by a to the power minus x को हम 1 by a to the power x लिख सकते हैं, और यदि मैं डिनोमिनेटर कॉमन करूं तो ये क्या हो जाएगा a to the power x divided 1 डिवाइड by a to the power x. So वो न्यूमरेटर में चला जाएगा like a to the power x dx. So अब इसको हम मान लेंगे equation 2. So according to the concept, we need to add equation 1 with 2. So we will get I plus I, that is 2I. This will be equals to integration of minus pi to pi. Now फर्स्ट इक्वेशन में कोसाइन स्क्वायर ऑफ एक्स था, सेकंड स्क्वायर में इक्वेशन में भी कोसाइन स्क्वायर ऑफ एक्स है. सो उसको यदि मैं कॉमन निकाल लूं while adding, सो इनटू द ब्रैकेट फिर क्या बच जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन में इज नथिंग यानी कि 1 फिर प्लस में a to the power x, और यदि मैं डिनोमिनेटर्स देखूं इनके, सो a to the power x plus 1, और फर्स्ट इक्वेशन में 1 plus a to the power x यानी कि कॉमन है, सो इसको भी कॉमन कर लेंगे 1 plus a to the power x dx. सो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे. सो यहाँ से 2i विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई कोसाइन स्क्वायर ऑफ एक्स dx हो जाएगा. सो दिस विल बी इक्वल्स टू, ना कोसाइन स्क्वायर ऑफ एक्स को हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन में सॉल्व नहीं कर सकते, सो इसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टी का यूज करना होगा.
So since we remember that cosine of 2x, this must be equals to the 2 cosine square of x minus 1. तो यहाँ से हम कोसाइन स्क्वायर ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कोसाइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 2 और इसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे से हो जाएगा माइनस का पाई टू पाई इंटीग्रेशन इनटू द ब्रैकेट 1 plus cosine of 2x divided by 2 dx. Now we will take the integration. So ये जो 1/2 था ये उधर जाके ओके यहाँ पर ये 2 आए हैं so 2 उधर जाके 1/2 हो जाएगा. Now if you remember, so cosine x is already an odd function. So odd function की property apply करेंगे. If you have been given integration minus a to a f of x dx, and if f of x is a even function, then we can just write it down to integration of 0 to a f of x dx. So यहाँ पर फंक्शन क्या है कोसाइन ऑफ एक्स और cos x ये इवन फंक्शन होता है ऑलवेज. सो इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए ये 1/2 यहाँ पर तो आया है, साथ ही साथ प्रॉपर्टी का यूज किया सो 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई हो जाएगा and into the bracket 1 plus cosine of 2x divided by 2 will be as it is at dx. So यहाँ से 2 से 2 cancel. Now we can just separate the integration. So 1/2 will be taken as common. Integration 0 to pi 1 dx plus में 1/2 common. Integration 0 to pi cosine of 2x dx. This will be equals to, so 1/2 will be as it is. Integration of 1 dx will become x and the limit will go from 0 to pi plus me 1/2 as it is. Integration of cosine of 2x will be sine of 2x divided by the derivative of 2x will be 2 and the limits will go from 0 to pi. So this will be goes. अब यदि हम अपर लोअर लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर दे तो ये हो जाएगा 1/2 पाई माइनस 0 प्लस में 1/2 और ये वाला जो 1/2 है सो ये हो जाएगा साइन ऑफ 2 pi/2 माइनस में साइन 0/2. Now sin 0 is 0 while sin 2 pi is also 0. So only remaining is what? Pi minus 0/2 yani ki pi/2. So the required answer to the integral will be pi/2 and therefore this is going to be the required answer of this question as per the given option. Option C is correct. So this is the required solution. I hope you understand. Well, best of luck. Thank you.